Yes, beta, good morning to all of you. Hope you all are fine. Today we are going to do the next chapter, chapter number 2, all about teeth. Clear? Now you will tell me, when you take a bite of an apple, what happens? What happens when you take a bite of an apple or chapati or anything you eat? When you take the first bite, what do you feel in your mouth? What happens in the mouth? Write it in the chat box. Anji, yes. What happens when you take the bite of an apple? What happens in your mouth? What is your observation? Write it. Yes, your mouth begins to produce a juice, water. Okay? Your mouth begins to produce a juice, a water. Okay? And then what happens? साउंड कम्स ओके ये भी ठीक है कि जब आप बाइट लेते हो तो एक साउंड आती है बट व्हेन इट एंटर्स योर माउथ तो योर माउथ इज वाटर्ड माउथ में से पानी आता है टू गेट इट वेट एंड एप्पल गेट्स वेट ड्यू टू द जूस रिलीज्ड इन द माउथ डू यू नो व्हाट डू वी कॉल दैट वाटर विच इज प्रेजेंट इन द माउथ जो हमारे माउथ में वाटर प्रेजेंट होता है व्हाट डू वी कॉल इट saliva. What do we call it? Saliva. Clear? It is produced by the salivary glands present in the mouth and it helps to make the food chewable, wet. Then after that, you start chewing your food. कोई भी आप bite लेती हो, after taking first bite, it gets wet and you start chewing it. What is used to chew the food? What is there inside the mouth that helps to chew the food? Yes, I'm waiting your answers. Be quick to answer. Okay? Yes, Garima, you are not concentrating. Beta, who is near you? Teeth. Very good. Okay, your teeth helps to chew the food, to cut it into simple parts. Then after chewing the food, you swallow it. The next step what is? You swallow the food. It's not there ना कि आप bite लेते हो और सीधा swallow कर लेती हो. No. First of all, you chew. If you take something solid, liquid तो आप सीधा swallow कर लेती हो. But when you take something solid, then you chew it first. आप उसको chew करती हो. Then after that you swallow it. Okay? And next, what are the functions of the teeth? You said कि teeth are there to chew the food. तो first function तो हो गया. Teeth helps to chew the food. वो हमें खाना चबाने में help करती हैं. What else? What are the other functions of the teeth? All of you have teeth? What else they have? क्या करते हैं वो? Tongue is also there which help to swallow the food, which help to speak, which help to taste the food. Taste buds are there, very good. Karman is good answer. Teeth help to speak us. If teeth are not there, our words, some of the words will not be clear. We cannot pronounce the words clearly if no teeth are there. Clear? They help us to speak. कई बार ग्रैंड पेरेंट्स के दांत नहीं होते ना, जब उनके नकली दांत लगे होते हैं, वो निकाले होते हैं, तो वो कैसे बोलती हैं? उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाती है, वो क्लियरली वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते. ओके, सो नेक्स्ट, दे गिव शेप टू द फेस. अगर टीथ है तो आपकी शेप डिफरेंट होती है फेस की, बट अगर टीथ मुंह में नहीं है तो मुंह कैसा हो जाता है? ऐसे हो जाता है ना, उसकी शेप चेंज हो जाती है. अभी ग्रैंड पेरेंट्स की यंग वाली फोटो देखना और जब उनकी
टीथ नहीं होते मुंह में, तब उनकी फोटो देखना तो यू विल लुक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. You will see the difference. So teeth help us to smile. Okay. When your teeth are there, your smile is beautiful. And they help to chew, they help to speak. These are the different functions of the teeth. Clear to you? Now, at what age did you get your first teeth? अब बहुत छोटे थे, आपको नहीं पता होगा, बट यू कैन आस्क द पेरेंट्स लेटर ऑन एट व्हाट एज यू डिड गेट योर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ. फर्स्ट टीथ 4 months. ओके, यू नो. ओके, सबसे पहले कैसे टीथ आते हैं? वेरी स्मॉल, वेरी क्यूट से टीथ आते हैं. तो लुक लाइक दिस. जब बेबी होते हैं तो यू गेट योर first set of teeth. They start at the age of 6 to 12. कुछ के 4 months का होने के बाद भी start हो जाते हैं, बट जो एवरेज एज है that is 6 to 12 months. 3 months, very good. 3.5, 8 months, good. Okay, 1 year से पहले पहले जो आपके जो फर्स्ट टीथ हैं, we call it baby teeth or temporary teeth. They start arising. Clear? They start growing. Then most of the kids, they have their set, they complete the set at the age of 3 years. Which set? First set, baby teeth or temporary teeth का set है. It gets completed by the age of 3 years. Near about 3 years, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है. Clear? We call them temporary teeth because, okay, they start falling at the age of 5 or 6. आपके वो टूट चुके होंगे, टूट गए ना आपके, then your face looks like this. Okay, जब आपके टीथ जो है टूट के नए वाले आने स्टार्ट होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, उसके बाद कोई टीथ नहीं आते. Then we should be very careful. We should take care of these teeth जो अब हैं आपके पास. Temporary teeth are 20 in number. Okay, but after that their eruption starts. They start falling, टूटना शुरू हो जाती हैं. After 3 years of age means that after at the age of 5 or 6 they start falling. Clear? वो गिर जाते हैं. Then another set of teeth, it start growing, it start appearing after the milk teeth. They start, after the milk teeth start falling at the age of 5 or 6, you get the permanent set of teeth. They are 32 in number. Clear? Milk teeth कितने थे? 22. अब जो परमानेंट है they will 32. अभी आपके 28 होंगे, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स आपके 4 more टीथ आ जाएंगे और यू विल गेट टोटल 32 permanent teeth. And completion of this set is at the age of 12 to 13 years. Okay, by that time जो आपके मिल्क टीथ हैं वो टूट जाते हैं और उसकी जगह पे न्यू टीथ जो हैं आ जाते हैं. दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ? दे आर 32 and temporary teeth 20. Now you can compare them, milk teeth or temporary teeth with permanent teeth. You know how many types of teeth are there? 4 types. They are incisors, canines, molars and premolars. आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, देखो, these 4 are the incisors. Clear? 4 in each jaw. ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 4, टोटल कितने हो गए? 8. ये टेम्परेरी भी 8 होते हैं और परमानेंट में भी 8 होते हैं. These are called incisors. Clear? So together
they form 8 in both the jaws. Upper jaw में भी 4 incisors, lower jaw में भी. और ये permanent में भी 4 ही होते हैं. Upper jaw 4, lower jaw total 8. Now see canines. They are red in color. This one and this one. On both sides of, on each side of incisors, there is one canine. दोनों साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे canine होता है in one jaw. टोटल कितने हो गए? 4. 1, 2, 3 and 4. परमानेंट में भी इसका नंबर 4 ही होता है in each jaw. क्लियर? सो ये भी देखो 1, 2, नीचे आ जाओ 3 and 4. 4 canines in and 8 incisors. Then आते हैं आपके molars, 8 in temporary teeth जो blue color में है. Upper jaw में देखो कितने हैं? 1 and 2. This side 1 and 2. Total 4. 4 plus 4 8. तो 8 plus 8 16 plus 4 20. टेम्परेरी टीथ कितने हुए? 20. डिफरेंस क्या है कि प्री मोलर्स नहीं होते टेम्परेरी टीथ में और मोलर्स जो हैं वो लेस होते हैं देन परमानेंट टीथ. क्लियर? सो अब परमानेंट में देखो 8 incisors, 4 in each jaw, 4 canines, 2 in each jaw and 8 premolars are there. जो येलो कलर वाले टीथ हैं इनको हम कहते हैं प्रीमोलर्स. ये आपको टेम्परेरी में नहीं दिख रहे. क्लियर? सो 8 premolars are there in permanent set of teeth, but in temporary there is no premolars. There are molars. Molars भी इधर 4 in each jaw, इधर कितने हैं? 6 in each jaw. Clear? So there are 6 molars in each jaw in the set of permanent teeth. Okay? If we do the difference, incisors milk teeth में भी 8, permanent में भी 8, canines इधर भी 4, इधर भी 4, molars 8 in milk teeth and 12 in permanent teeth. Done? But premolars are there only in case of permanent teeth. Only in case of permanent teeth. Clear? Now, so we have done, there are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. How many incisors in permanent teeth? Write it in the chat box. How many incisors are there in 4 in each jaw? Total 8. ये आपने ध्यान रखना है कि आपको each jaw पूछा गया है या फिर total. 4 in each jaw, total 8. How many canines are there? 2 in each jaw, total 4. Clear? And premolars total 8. Clear? And molars total 12. 6 in each jaw. तो टोटल कितने हो गए? 32. आपने ये याद रखना कि इंसाइजर्स और प्रीमोलर दोनों क्या होते हैं? 8. 4 in each jaw, टोटल दोनों 8 होते हैं. कैनाइंस 4 होती है और मोलर्स 12. Okay? Now today we will do the structure of the tooth. Clear? Now you have to keep your pencil and rough notebook with you. Okay? I'm going to remove the screen. I'll draw on the board. You will keep it. You have to pin my video, okay? You will pin my video. Clear? Board is visible to you. Now I'm going to draw
आपने मेरे साथ साथ ड्रॉ नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल you will look at how I am drawing, you will understand it, after that you will draw it. Okay, when I ask you, then now look at the board carefully. Yes, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, एक W लाइक स्ट्रक्चर बनानी है, like this. क्लियर? फिर इस W को आपने क्या कर देना है, इसको डबल कर देना है. Like this. Clear? This W like structure. Then after that you will make this visible. Clear? Now this is the root part and this is the crown. Two parts of teeth are here. This part which is outside the gum, we call it crown. And the part which is inside the gum, it is called root. जहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, पहले आपने ये W टाइप बनाया, इसको डबल कर दिया, देन आपने इसका जो बाहरी आउटर क्राउन बना दिया. क्लियर? नाउ द पार्ट विच इज इनसाइड द गम, two parts of teeth are there. The part which is inside the gum, that is root. Part which is outside the gum, that is called crown. अब आपने क्या ड्रॉ करना है, इसका inner part of this. Now you will make the dentin. Okay, you have to make it double. जहाँ तक आपको समझ लग गया, it's very easy, although it looks complicated, but it's very easy. अब आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसको डबल करूँगी. तो आपने जो डेंटाइन पार्ट है इसको डबल करना है. Dentine I have made with pink. Is it clear? Same I am drawing as it is in your book also. खाली आपको अंडरस्टैंड करना है इसको. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नाउ इनर पार्ट्स. जो आउटर मोस्ट पार्ट है टीथ का, विच इज विजिबल, जो हमें दिखता है व्हाइट कलर का पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड इनेमल. Enamel is the outermost part of the tooth, and it is, enamel is outermost part and it is the hardest part of the tooth. Clear? And inside the enamel, the second part below the enamel is dentine. This is dentine. Clear? If enamel is the hardest part, it protects the inner parts of the teeth. It is the hardest part of the body also. And this is dentine. Dentine is the part below the enamel. ये enamel के नीचे होता है, and it is softer than enamel, but it is softer than enamel, but it is harder than the bone. Bone से ही hard होता है, but it is softer than the enamel. Enamel is the hardest part, जो हमें white part, हमारे जो teeth है वो दिखते हैं बाहर से.
And inside the dentine there is pulp. Pulp is the soft part of the teeth, innermost part of the teeth, and it contains nerves and blood vessels. Okay? It is the soft part and thread-like structures, nerves are there. यहाँ पे nerves होती है inside the pulp and blood vessels also. Clear? यहाँ पे blood vessels भी होती हैं, nerves होती हैं and nerves are the thread-like structures. These are nerves and blood vessels. Okay, nerves and blood vessels. Look at this. These are nerves and blood vessels. Blood vessels are there to supply blood to the teeth, to supply food to the teeth, and nerves are the thread-like structures which help us to feel pain, touch, okay, etc. Sensations to it we can feel with the help of nerves. Pain होती है teeth में, that is also felt with the help of the nerves. So pulp is a soft part which contains nerves and blood vessels. Dentine protects the pulp. It is softer than enamel and it is harder than bone. Bone से hard होगा. Clear? And it is present inside the gum. These are the gums. And gums, roots of the teeth, they have to hold the teeth inside the gum. जहाँ पे gums present होते हैं and gums में क्या है? Root is present and this root it helps to hold the teeth inside the gum. Clear? Once more I am going to explain this. First of all, आपने क्या बनाया? Root part of the teeth of the tooth. एक उसका root part है, आपने उसको W की फॉर्म में ऐसे बना दिया. Clear? Then उसके बाद आपने बनाया outer white part of the tooth. This is enamel. Enamel is the hardest part of the tooth. ये hard part होता है tooth का और ये protect करता है inner parts of the tooth. Clear? It is the hardest part in the body. Body में हमारे सबसे ज़्यादा hard part होते हैं. It is the outermost part of the tooth. It protects the inner parts. And below enamel there is dentine. What is the function of dentine? To protect the pulp. Pulp is very soft. It contains blood vessels and nerves. So you will again this is dentine और dentine के अंदर वाला जो है this is the pulp. Pulp is very soft. It contains blood vessels and nerves. Blood vessels provide blood to the teeth, clear, and so nerves and they help in sensations like we can feel the pain, we can feel cold, hot, etc. Clear, touch also. So this is the structure of the tooth. You need to draw it in your notebook today. You have to learn its various parts. You must know how to label it also. It is not difficult. It is present in your book at page 16 also. 16 page पे भी आपके बनी हुई है.
Now, if any query is there regarding the structure of the took, you can ask me. So, in the rough, you can take 2 minutes to draw it roughly कि आपको बनानी आ रही है. If problem is there, so you can ask me right now. Yes. If any query is there, if you feel any problem, you can ask me right now. You can raise hand. Rajdeep ma'am will unmute you. Is it clear, beta, or you should, or I should repeat it once more? एक बार फिर से बता दूं all parts of the tooth. If some problem is there, so you can ask me. Is it clear? Write it in the chat box. Chat box में अभी मुझे लिख के बताओगे if it is clear to you. Done? Yes. If any problem is there, you can ask me. Will you draw it? Will you draw it? Okay. मैम Yes. मैम इनेमल जो ऊपरी हिस्सा होता है दांत का enamel जो वो आप अपने Excuse me, मिरर में ma'am. देखना टीथ को, जो गम्स के पिंक कलर के गम्स होते हैं ना, गम्स के जो ऊपर वाला बाहर वाला वाइट पार्ट होता है टीथ का, दैट इज इनेमल. जो आउटर मोस्ट कवर ऑफ द टीथ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, दैट इज कॉल्ड इनेमल. मैम वो क्यों नहीं बेटा मैम इज स्पीकिंग ना. बेटा वो पार्ट क्योंकि फुल लाइफ हमने उसको यूज करना है टू च्यू द फूड. क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम जो आपने कल एक्सरसाइज कराती थी उसमें से मेरा रहता था, तो आप उसके आंसर की भेज दोगे? बैक एक्सरसाइज की आंसर की? यस. I think I have sent it in the class. I'll check again, but I think I have sent it after the class. मैंने सेंड कर दी थी बेटा. आपने स्कूल नोटबुक पे इसको ध्यान से फुल पेज यूज करके सुंदर सी डायग्राम बना के उसको लेबल करना है. ओके, अभी तो आप रफ में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट वेरी नाइसली. लेबल भी करना है. ओके. यस, आई हैव सेंट द बैक एक्सरसाइज. बेटा आप अपना चेक करना, क्लास का ग्रुप, उसमें मैंने आंसर की शेयर की थी. ओके. Any other problem is there? You can ask me. Now I am going to share. Rajdeep ma'am will share a link. Okay. This is one Google form. आपने इसको solve करना है and you have to submit it. We will take your attendance from this link also, and we will check that you have done the chapter 1. Is it clear to you? Okay. This is your revision assignment. ये आपका एक सरप्राइज रिवीजन असाइनमेंट की फॉर्म में एक टेस्ट है. सरप्राइज टेस्ट है, इसके कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा. वी विल जस्ट सी कि वेदर द चैप्टर इज क्लियर टू यू और नॉट. मैम हैज सेंट द लिंक. आप इस लिंक पे क्लिक करोगे. यू हैव टू राइट द आंसर्स, देन यू हैव टू सबमिट इट. देयर इज लिंक इन द चैट बॉक्स. क्लिक इट, write the answer, solve it, then submit the Google form. Clear? I am always available for you. Agar any query is there, if any query is there, so you can ask me anytime. Okay, beta? Please check the link and solve the Google form. By the time, if you want to ask me, so you can ask me. Okay? And after